चलिए वेलकम बैक। हम खेल रहे हैं मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर। मुझे जाना कहाँ है यार? ओके, शायद बस फाइनल बॉस फाइट हो गई थी मेरे हिसाब से। ओके किसे मार रही है? क्या था ये? घेर रही है? आप कौन है साला? किसका कॉल आ गया? Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. अच्छा,
Where'd you go? Just let me rest. My wounds. Is that him? I can't walk any farther. Where are you, Snake? Oh, damn. I can't walk any farther. Damn it. This tastes like crap. Oh, yuck. I think I can walk again. Right there? I'm so hungry. We've got hostiles. See him? Leave this to me.
क्या नौटंकी हुई। Watch out. That company. I'm so hungry. जाऊँ वहाँ से। कैसे करें भाई? Where'd you go? Damn it.
तो कंफ्यूज हो गया भाई। समझ गया ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ। Damn it. What did you give me? Just let me rest for a little bit. क्या ड्रामा है इसलिए।
Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. Good. Snake, if you go southeast from there, you'll come to a road leading to the lake. Take Eva with you and head southeast. कंधे पे उठाता है ये। Damn. क्या नौटंकी है। अच्छा समझिए मुझे क्या करना है। उसे लेके आना पड़ेगा साथ में। I can't walk any farther. ऐसे ले जाना पड़ेगा लगता है। साथ में लाना पड़ेगा भाई। ऐसे ले जाना पड़ेगा भाई कि वो क्रॉस में तभी कर पाऊँगा जब वहाँ शायद 2 बंदे होंगे तब मेरे ख्याल से।
Damn it. मैं भी सोच रहा हूँ ऊपर जाएगा कैसे ये। सर यहाँ कट सीन ट्रिगर होगा यहाँ पे। हमें एक्चुअल में नहीं जाना, अपना आप जाएगा। क्या गेम है भाई। My wounds. Just let me rest for a little bit. I can't walk any farther. Damn it. ऐसे कंधे पे लिया तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे लगा गेम ख़त्म हो जाएगा। सर तो रबड़ की तरह खींचता जा रहा है। थोड़ा तेज़ी नहीं चलता है। तो वहीं फंस के ऊपर। I can't move.
walk any farther. याद कर दिया। मतलब वो चल भी रही थी, अब साली बिल्कुल ही कामचोर बन गई है। Snake, where are you? Snake. मैं सोच रहा गिर जाए नीचे। ओह ये बॉय, हे मैं आ गया, मैं आ गया। महीना टंकी है, कंधे में भी उठा सकता है इसमें तो। ये फैंटम पेन में तो कंधे में ले जा सकता था, बट इसमें तो ऐसे ड्रैग करके ले जाना पड़ रहा है, बहुत टाइम खा रहा है। I can't go on. बाद नौटंकी कर रही है, यहाँ चढ़ जा रही पर चल नहीं सकती है। आगे काफी यस। क्या दिख गया इसे? Come on, Snake. क्या बात है? We made it. We made it. Over there. अब क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे एक जहाज खड़ा है, और इससे पहले कोई हिसाब चुकता करना है। It's the boss, isn't it? बॉस का I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me. नो प्रॉमिसेस, कोई प्रॉमिस नहीं भाई। आहा क्या बात है। Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. ये सीन जो है, ये सफ़ेद फ्लावर्स वाला, ये PlayStation 2 में बहुत बढ़िया सीन था। हालांकि इतना पावरफुल हार्डवेयर नहीं था उस टाइम पे, फिर भी बहुत बढ़िया था। और अब तो इस गेम में तो बहुत ही बढ़िया है वाकई में। वाइट फ्लावर्स सही में। Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again.
The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? No. There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. Relative. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. Story sunte hain. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish. Covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. Yes. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Mercury. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. Oh. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War.
And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. अच्छा He was my friend. But one of us had to die. चार सी बात है I was left with no choice. आपके सामने दुश्मन The है तो sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and Must one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. अच्छा But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war मतलब cause a फिलोसोफर्स अब shift in नहीं the है वो मर times. चुके हैं This और जो shift नए leads to जो अब renewed जो चीज़ें हैं conflict, and वो in सब turn triggers the next अपने war. काम में लगे हुए हैं Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. one of the philosophers I am the last remaining child of the philosophers. oh But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. oh I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. oh I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all.
No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to do. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. Endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Miggs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Excellent. कुछ खा लेता हूँ. This is horrible. Hey, this works. I'm gonna puke. Camouflage. Where did you go? Here I come. Here I come. I'm disappointed.
भाई गन कहाँ गई मेरी? साला गन कहाँ चलेगी बे? ये कितना टंकी होगी मेरे साथ। गनी की और तो कुछ नहीं हो रहा। Here I come! ये सारे गन तो मेरी ले रही है। अब ये क्या है? हाथ फटी चोरी भी तो यार। ओके सबसे दुख भरा सीन। ये म्यूजिक Take this. Keep it safe. It's our only hope. A Patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man.
Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. गेम एंड करने के लिए मुझे बटन दबाना ही पड़ेगा। बात है उसे नहीं दिखाया, सब फ्लावर जो रेड हो जाते हैं उसे नहीं दिखाया, शायद अब दिखा, क्या पता। यस, ये सी ना, तुम आ गए। सबसे दुख भरा सीन, अभी भी इतनी दुख की बात है, लेकिन जब से सच्चाई पता लगेगी तब, मतलब यहाँ तक हमें भी नहीं पता इस गेम में मतलब क्या चल रहा है बेसिकली। जब मैंने पहली बार खेला था, लेकिन जब इसके आगे का सीन है तब मुझे पता लगा कि साला गेम में ये चल रहा था। टेकन 7 Ready to go, Snake? बॉस इसको मतलब पहले से कुछ बता चुकी होती, जो है हमारी तातियाना, जो भी इसका नाम है। बॉस ने पहले से कुछ बताती, पर इसे नहीं, पर ये स्नेक को नहीं बताती है कुछ भी। कि बॉस ने बोला था कि स्नेक को कुछ मत बताना जब तक वो यहाँ से चला ना जाए। यहाँ से कंप्लीट करके जब जाएगा, अभी तक ये भी समझ रहा होता है कि वो गद्दार है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हाँ खेलते हैं साहब, बस ये एक बार एंड हो जाए तो खेलेंगे कुछ देर। मतलब सबसे बड़ा शौक तो इस गेम में यही था, जो गेम के एंड में जो बताया जाता है वो, मतलब जो ये बताती है, स्नेक को बताती है ना सच्चाई, तो पता लगता है कि चला कहानी तो कुछ और ही थी, हम कुछ और ही समझ रहे थे। और अभी तो ऑसेलॉट आया, मिस्टर ऑसेलॉट। ये साला यही करता रहेगा बस। मुझे साला मैं भूल गया था तू जिंदा भी, तुझे पेलूंगा, रुक। अरे इतने से ने पूरा जहाज हिला दिया, इतने से इससे। बहुत बढ़िया।
क्या चाहता है? अच्छा, हाथ से लड़ाई करना चाहता है वो। ये देख रही पीछे लड़ाई चल रही है, ऐसे मूड खराब हो रहा अपना। अबे 3 बंदे इतने हैवी है कि मजाक चल रहा है। बहुत सा कॉन्सियस था, अभी भी जिंदा है। मैंने पहला मेटल गियर यही खेला था, और जब मैंने ये वाला खेला था, मैं सारे मेटल गियर खेले, ऑलमोस्ट सभी खेले मैंने इसके बाद। मतलब लास्ट वाला फैंटम पेन भी खेला, पर वही है फैंटम पेन जो था लास्ट इंस्टॉलमेंट थी इसकी, और उसका तो कोई मेटल गियर नहीं फिलहाल। Snake, try to remember some of the basics of CQC. CQC। अब ये भी उसी पे आ गया है। आखिरी में हार पार के पिटने लात घुसे खाने के बाद गन वन सब फेल होने, आखिरी में उसी पे आ गया। मतलब 3 बंदों का वजन नहीं सहन नहीं कर पा रहा है। कौन सा प्लेन है भाई? बच्चों का। बहुत वर्चुअली जिंदा है। यस, हम ऐसा कह सकते हैं। स्नेक के अंदर आई थिंक को ये क्या था? साले मेरी आँख फूटी भी पहले से। खड़े हुए फेयर फाइट होगी। I picked up a few new moves. अच्छा, दिखा फिर चपंडू। ये देख रही क्या चल रहा है पीछे। Doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! क्या सीन है। दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरे को मारने में। जल्दी मरो, एक बंदा, प्लेन क्रैश होने वाला है। एक गोली रखता हूँ इस पर अपने पास, लॉकेट में। ये फिल्मी स्टाइल से बाज नहीं आएगा। Yeah, all right. और स्नेक तो स्नेक ही है, बिल्कुल मेटल गियर सॉलिड फैंटम पेन वाला फेस आ रहा है इसका, बंदे का, स्नेक का। चलो जगल करो। अब ऐसा मत कहना मुझे चूज करना है। Choose your death. What's your name? Snake. No, not that name. Real name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men. Names. My name is Adamska. Adamska. What's yours? John. John Doe. John. झूठ बोला, इसका नाम जैक था, जैक, जो कि बॉस ने बोला था जैक इसे। I won't forget it. ड्यूटी बोलना भला, क्या कस्टमर सर्विस है। Come on. मैंने क्या लिया पता नहीं, चल मरने वाला हूँ मैं। मैंने कौन सी गन ली मुझे खुद नहीं पता, तो काबो बन गया।
वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। मरने वाला हूँ। गोलियाँ नहीं है मेरी वाली में, गोली नहीं है। शिट। It's a blank. Oh God, please. Oh, that was fun. क्या ड्रामा था साला, ब्लैंक शॉट यूज़ करा। पर ब्लैंक शॉट से भी डैमेज होती है भाई, उसमें भी मतलब डैमेज होती है। उसी में आखिरी ख्वाहिश है इसी से फाइट करना, और अब उसने करी। गुड, अच्छी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई इसकी, ऑसेलॉट की। और आगे के मिशन में भी साथ होता है इसके। तो ऐसा कौन करता है? पर ये जिंदा है, रहने वाला है कुछ गेम तक। हाँ, 4 में भी था ये जिंदा, और मेटल गियर सॉलिड में एक ट्विन स्नेक में भी था ये, आई थिंक। जब इसका क्लोन होता है उसमें भी जिंदा था ये। फैंटम पेन में भी जिंदा था। जब इसका क्लोन होता है उसमें भी जिंदा होता है ये, मुझे याद है। और लास्ट पार्ट जो होता है गन्स ऑफ द मेटल गियर का लास्ट पार्ट है, मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से 4 गन्स ऑफ पेट्रियट, उसमें भी जिंदा होता है। तो फाइनल पार्ट उसी में मरता है बेसिकली, स्नेक ही में से मारता है इनमें फाइट करके। एक्चुअली स्नेक नहीं था, बेसिकली सॉलिड स्नेक होता है। सॉलिड स्नेक ही मारता है उसको, मतलब स्नेक का क्लोन कह लो, या जो भी इसका बेटा कह सकते हैं, स्नेक का क्लोन के थ्रू, क्लोनिंग से। We made it. Yeah, we sure did. नर्विक राजिंग मुझे तो अच्छा लगा, पर पता नहीं लोगों की, क्योंकि एक्चुअली वो स्नेक को देखना चाहते हैं बेसिकली। जो मेटल गियर सीरीज़ है वो स्नेक की सीरीज़ है, जो भी स्टोरी है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब स्नेक की है। अच्छा, घोड़ा भी नहीं किया उसका, फिर बॉस का घोड़ा भी उसी के साथ मरेगा। कि यहाँ पे 10 मिनट में बॉम्ब गिरने वाले थे। मिसाइल मिसाइल्स इनकमिंग। Oh no, Migs! उस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। There's no way out. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great. अगर आप इस गेम के सारे मिशन बिना किसी कपड़ों के, तो जब गेम की एंडिंग में आपको मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा, तब भी आप बिना कपड़ों में ही रहोगे। मैं ध्यान नहीं देगा इस बात पे यार। Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. वापस बुला लिया। कमांडर क्रुशेव मतलब रशियन। Migs, they're turning back. इन्होंने इस पर अटैक नहीं किया, शायद कोई डील हो गया यू अमेरिका और उसकी रशिया की, तो उनको छोड़ दिया जाने दिया जाए। बिल्कुल सही टाइम पे घंटी बजी। Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is यस, this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. स्टिंग मिशन The में thing is, मजा आ गया। you made it out alive. ये का As long as Khrushchev is with us, कुछ I नहीं don't think किया। they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena base to meet you.
To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. अब कुछ कट सीन्स आएंगे आई थिंक. यस, गलायत क्या तो कोई ब्रांड था क्या रेडियो का? ये यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है. अभी तक ये पता है नहीं सारा सीक्रेट क्या है. So what are you going to do now? Go back to the KGB? KGB. What do you want me to do? Did you ever think about coming रेडियो back to कोजिमा को America? पर्सनल प्रॉब्लम है I can't go भाई back. अमेरिका से. I've left मे भी America हो सकती है. आखिर अमेरिका सबसे But you say हरामी this कंट्री जो है, मतलब कंट्री मतलब इन द सेंस कंट्री की बात नहीं कर रहा, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, and I आर्टिकल still वगैरह ये owe सब dinner. दुनिया पे कब्जा करने की और दुनिया की पुंगी हो जाने की जो कॉन्सेप्ट है उनके, ये Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. अच्छा बहुत बड़ी. सही सही. अरे गिलास टूट गया भाई. गुड 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 वेरी गुड. एक मिनट, ये ऊपर कैसे आ गई? बड़ा शॉक. तुम्हारा शॉक की स्पेलिंग देखो क्या है. हमें ध्यान दिया हो कि मेटल गियर फैंटम पहनने वाली लड़की होती है जब वहाँ उसका नाम क्वाइट था लड़की का. किसी भी शेर नहीं है ड्रेसिंग सेंस. अबे कोई कॉल आ रही है मेरे भाई. चल यहाँ से. कॉल आ रही है नॉनसेंस. कॉल गई ऐसी तैसी करने. चलो भाई लेटर लिखो, कॉल का ज़माना चला गया. अभी तो सब कोजिमा जी बता सकते हो किस चीज़ के शौकीन है. बस उन्होंने जरूर नहीं हो सकता कोनामी उसे कहता ऐसा करो ऐसा करो. ये तो अपना डेथ स्ट्रैंडिंग में तो ऐसा कुछ नहीं आता, मुझे याद है. एक से पड़ा और ढेर हो गया. आप इसे छोड़ के गई हो किसके लिए कुछ कैसेट या जो भी है. अब सच्चाई पता लगेगी इसे. ऐसे लग रहा है इसे रणभूमि के सारे मिट्टी पिट्टी और जख्म वखम ठीक हो गए इसके. Scholars लग tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. फिलोसोफर्स लेगेसी. Forgive me, snake. अच्छा तो फिलोसोफर्स लेगेसी ले गई आई थिंक. गुड बाय. एक वो छेड़े को, हाँ टेप छोड़ के गई होगी. अब इस टेप को प्ले करेंगे. मुझे असली चीज़ तो काट दिया है. मतलब अब काटना है क्या, वो चीज़ वो दिखाएगा क्या उसमें. वो अब टेप चलाएगा. अब उसे पता लगेगा सीक्रेट क्या था असल में. असल में वो लेके नहीं गई होती. फिलोसोफर्स लेगेसी जो होती है वो अमेरिका तक पहुंच जाती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये डबल एजेंट थी और ये अमेरिका के लिए भी काम कर रही थी एक तरीके से. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev.
I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ PRC. Department of the People's Liberation Army. डबल एजेंट है ये, मतलब चाइना के लिए भी काम करती थी, रशिया के लिए भी। I tricked you. और उसने वहाँ पे धोखा भी अपनी मतलब एक किस्म से यहाँ से धोखा दे के चाइना के लिए काम कर रही थी। ट्रायम्फ, क्या बात है भाई, ब्रांडिंग ट्रायम्फ की। देखा ट्रायम्फ की ब्रांडिंग। मतलब कोजिमा को और कोनामी को कुछ आपस में टाई अप था क्या कौन है ट्रायम्फ के साथ? You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I ये फिलॉसफी है दोस्त, इसमें रियलिटी नहीं फिलॉसफी है, इसमें थोड़ा समझना पड़ता है चीज़ों को। Were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place. Saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. Okay. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. Okay. The Chinese government had its eye on the legacy too. Okay. I got the film containing the legacy. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod. Okay. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. देखा, डबल एजेंट पे कहीं भरोसा नहीं करना। I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. Good. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. ये इनकी एजेंट थी This और was बॉस before the war. Back then, फिलोसफर्स they की were collecting children from बेटी all थी। over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. देखा, She बॉस was तो the बॉस only है, one who knew I was a fake. बॉस को हमेशा पता है फेक है। She told me everything. अब Why did ये she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. बट नाउ अंडरस्टैंड। But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. Okay. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. ओह, And I intend to keep it. क्या बात है, बॉस से इम्प्रेस्ड है भाई ये। I just wanted you to know. And ऐसा लग रहा है मैं फैंटम पेन खेल रहा हूँ। to live. ये असैसिन उसमें भी होता है। इसने रेडियो फेंका, इसने अपना आग के अंदर, चल साले रेडियो नहीं करना, कोई कम्युनिकेशन है। ये क्या हुआ, भूख गया? Snake. Listen अब to आए, me. अब सच्चाई She आएगी। didn't betray the United States. ये सबसे बड़ा झटका था इस गेम में मेरे लिए जब मैंने खेला था पहली Far बार। from it. फिर मुझे She was a यकीन नहीं हुआ hero साला who गेम died में हम for क्या her. सोच रहे थे और क्या She निकला carried एंड out में। her mission knowing full well what was going to happen.
Self-sacrifice. Because that was her duty. स्नेक आएगा सालों हरामजादा, मेरे हाथों से मरवा दिया उसको। ये हाथ नहीं मिलाएगा इससे आई थिंक। मेडल ऑफ ऑनर, तुम हो बिग बॉस की तुमने बॉस को मार दिया। You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. बिग बॉस। You are a true patriot. नहीं मिलाएगा, ये हाथ नहीं मिलाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। चल हाथ ही मिला इसे। इसने पूरे गेम में नहीं रहा था, मैंने इसको मेटल गियर में कभी रोते हुए देखा ही नहीं कभी, इस टाइम को छोड़ के बस। ये था साला जिससे हाथ नहीं मिला था। ये हाथ तो खैर उससे भी नहीं मिला था, वो जबरदस्ती पकड़ लेता इसका हाथ। You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. बात पड़ेगा। It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. अब यूएस गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती थी कि ये हमारे साथ है, क्योंकि हम नहीं जानते बॉस कौन है। भाई ये गद्दार हो गई, हमें नहीं पता, क्योंकि ये प्लान के थोड़ा अकॉर्डिंग नहीं हुआ। This they concluded would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life was ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, Patriot. but
as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Why white flower? Snake. History will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. देखो उसकी कब्र है पर उसकी कब्र पे उसका नाम नहीं होगा Patriot. क्योंकि लोगों की नज़र में गद्दार है इसलिए उसकी कब्र पे उसका नाम भी नहीं होगा बस खाली शायद पेट्रियट लिखा हुआ है Son of Big Boss are born. ये गाना मतलब गाना एंडिंग में बिल्कुल सही फिट बैठता है गेम की